हाय एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सब लोगों के साथ मैगी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल तरीके से 10 मिनट में बन के तैयार हो जाने वाली। आपने बहुत ही मैगी बना के खाए होंगे, बट एक बार मेरे इस तरीके से बना के खाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है, इसमें 2 टीस्पून सरसों का तेल डाल दिया है और इसे हम गर्म होने देंगे। उसके बाद यहीं पर हम डाल देंगे Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Pieces is a form of art. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. रही है, जितने भी इसमें पानी है ना सब सूख जाएगी। इसमें लगभग देख सकते हैं यहाँ पे पक के जो ये तैयार हो चुका है। थोड़ा बहुत इसमें मतलब ये ग्रेवी दिख रही है, तो ये क्या होगा ना, इसे हम मतलब सुखा लेंगे। सुखाएंगे नहीं, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये जो ग्रेवी है ना, ये इसमें खुद ही सूख जाएगी। 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे तो हल्का ठंडा होने के लिए। और ये भी हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ करने से पहले ही हम इसमें बाकी के जो 2 पैकेट और मैगी के मसाले थे ना, वो हम डाल देंगे इसमें। देख सकते कितनी अच्छी लग रही है दिखने में, ये एकदम खिली खिली अलग अलग। इसमें मैंने दो पैकेट जो मैगी का मसाला बच गया था वो मैंने डाल दिया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। और इस वक्त क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये जो है बन के तैयार हो चुका है। ज़्यादा ऐसे पकाने से ये गल जाएगी और अच्छी भी नहीं लगेगी खाने में। इसीलिए ऐसे हम टोटल 10 मिनट में ये बन के तैयार हो जाता है फ्रेंड्स, और बहुत ही टेस्टी लगती है। इसमें कोई मतलब प्याज वाज काटने का भी झंझट नहीं रहता है, मिर्ची प्याज नहीं काटने का झंझट रहता है। ऐसे ही बन के तैयार हो जाता है। मैंने इसे प्लेट आउट कर लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी खिली खिली बन के तैयार हुई है। 5 मिनट तक इसे हम छोड़ दिए थे ऐसे ही, तो उससे क्या हुआ है ना, हल्का ठंडा भी हो गया है ये, और बहुत ही अच्छी दिखने में भी लग रही है। और टेस्ट तो पूछो ही मत फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी लगी थी खाने में। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो लोग मैगी खाना पसंद करते हैं तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कैसी लगी ये रेसिपी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड जो भी चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।